Hello and welcome to an India Today special broadcast that comes to you from the Govardhan Ghat in Kashi. I'm Gaurav Sawant and it's been a big day, at least for the Hindu side, at the Kashi court, where the court mandated survey committee, and both of them, one headed by Ajay Mishra and the other headed by Vishal Singh, they've submitted their reports. India Today gets you inside details and exclusive details of what both the reports contain and what it means in this fight for the Kashi Vishwanath temple and the Gyanvapi premises. Shivling, temple ruins, image of deities. Trishul, damru and lotus. Survey reveals Gyanvapi's Hindu past. No half-truths. Full survey report only on India Today. Gyanvapi Truth Files. Every page, every finding, we will get you those exclusive details here on India First. I'm Gaurav Sawant. As always, let's get started with the headlines at 10. Both Gyanvapi survey report accessed by India Today. Final report mentions a shivling at the Gyanvapi premises, signs of Sanatan culture, lotus, damru and trishul. Supreme Court defers the Gyanvapi hearing till 3 p.m. tomorrow, asks the Varanasi court not to proceed with the trial today. After Ayodhya and Kashi, the focus now is on Sri Krishna Janmabhoomi at Mathura. Plea seeking removal of the Eidgah admitted in lower court. Supreme Court jails Navjot Singh Sidhu for a year in the 1988 road rage case. The cricketer turned politician had battered a 65-year-old man who later died. Two major blows for Gandhis after Hardik Patel dumps the Congress. Former Punjab Congress chief Sunil Jakhar joins the Bharatiya Janata Party, says he quit Congress because of the party's divisive politics. And India Today now gets you details of the findings of the court-mandated survey committee. Remember, a survey was conducted first on the 6th and the 7th of May and then again on the 14th, 15th and 16th of May. Videography, photography, all pictures that were taken, all videos that were taken were sealed in front of all sides right then and there and then submitted in a court of law. What was found? What was found at the place where Muslims had their wazu khana? Was it a shivling? The Hindu side insists it was a shivling. The other side insists it was and remains a fountain. But what's the truth? What are the findings down to the size? The size in terms of the structure on top, the shivling, the coop around, the wazu khana, the distance from Nandi, all of that and much more on our top story. A shivling, lotus motif, damru, trishul, symbols associated with Lord Shiva and more signs of Sanatan culture. These are the big findings of the survey report submitted by court-appointed Special Advocate Commissioner Vishal Singh. The 10-page report has been submitted in the Varanasi court along with 3 boxes of evidence which include pictures and videos. जो नक्शे हैं वो भी आप लोगों ने सबमिट जी एकदम जितनी फोटोग्राफ्स थी और वीडियोग्राफी हुई है दौरान कमीशन कार्रवाई अंडर सील है वो हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। तो
तो ये कितनी फोटोग्राफ्स होगी, किस तरह की फोटो? ये जानकारी नहीं है। जो फोटोग्राफ हुई है, सारी चीजों की फोटोग्राफी कराई गई है, सब सबमिट कर दिया गया है। A second survey report by sacked Commissioner Ajay Mishra is also now with the Varanasi court. It also mentions 4 Hindu idols, fragmented deity, debris of temple, walls inscribed with Hindu motifs and an image of the Sheshnag. मुझे देखने से मतलब वही प्रतीत हुआ कि ये नाक का जो है ऊपर ही टूटा हुआ फन टाइप का था। किस तरह के अवशेष खंडित हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? वो मंदिर के मतलब कुछ जो है ऐसा है कि टुकड़े हैं, मूर्तियां टाइप की हैं, जो है वो आपको देखने से लगेगा कि नहीं, हाँ ये किसी मंदिर का ही अवशेष है। मंदिर का अवशेष लगता है जी। The survey findings, accessed exclusively by India Today, clearly suggests the presence of the temple at the Gyanvapi Mosque complex. The findings are being hailed by the Hindu side. हमारी निश्चित रूप से मांग यही है कि वो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की खुदाई कर और भी चीजों को हमारे ट्रस्ट को समर्पित कर दिया जाए, दे दिया जाए, ताकि हम उसका भोग राग पूजन भजन कीर्तन अर्चन ये कर सके। देखिए, सर्वे तो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था, उस अनुसार जो है कि पक्ष विपक्ष दोनों लोग की सहमति से अच्छे से हुआ है और अच्छे से हुआ है। पूरा न्यायालय को सौंप दिया गया है। न्यायालय जो भी न्याय करेगा वो पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। But the legal battle is far from over. The Supreme Court will now hear the Gyanvapi case on Friday at 3 p.m. It has for now put a stay on the proceedings in the Varanasi court. Proceedings before the Varanasi court are going on. I have told you that the application which we have filed, that the Muslim side will also take some time to file their objections to our application. Mr. Abhay Yadav had mentioned before the court that they need some time to file their objections. So after all these formalities and document work are complete, the matter will proceed further for hearing. Today it so happened that the counsel for the plaintiff, Mr. Jain, was unwell. In the meanwhile, the proceedings which are going on should not continue. So this is being accepted by the court, and the court has directed that the proceedings so far till tomorrow is concerned. The heated courtroom battle over the Gyanvapi Mosque has left the locals divided. इस रिपोर्ट में क्या निकला है, आपको क्या पता चला? अरे रिपोर्ट में हमारे भोलेनाथ निकले, नंदी बैल निकला, त्रिशूल निकला है, वहाँ प्रसारक चिन्ह निकला है, तालाब निकला है, सब कुछ है वहाँ। ठीक, तो जो भी कोर्ट का निर्णय होगा आपको मान्य होगा? जी हाँ, मानेंगे, कोर्ट के निर्णय मानेंगे। और दूसरी बात, ये भाई कह रहे हैं कि यह शिवलिंग है, तो हंसने मजाक वाली बात है। वहाँ फुहारा था, फुहारा है, अब फुहारा ही रहेगा। All eyes now on the court, on the interpretation of what the findings have been, especially about the shivling, the trishul, the damru, Sringar Gauri idol, and also some other idols of Sanatan Dharm, as the report insists. Now these reports, the videos and the photographs were submitted in at least 3 boxes to the court, and now all eyes on court. So what happens next? The sensational survey findings are now with the Varanasi court. Will it impact the hearing in Supreme Court too? With Samar Srivastava and Gaurav in Varanasi and Anisha Mathur in Delhi, Bureau Report, India Today. I have Kaleemul Hafeez of the AIMIM joining me on the broadcast. I also have Sanju Verma of the Bharatiya Janata Party with me on the show. The Hindu side in this case, they want to dig deeper. They say that there is a wall that has been constructed, and that wall is mentioned even in this report. There are new bricks. Was this a new wall that was constructed? Was this wall being constructed to conceal some more facts? Will those facts come out? We'll talk about that in greater detail. But there's also this full-blown political war now. Akhilesh Yadav, Samajwadi Party chief and former Chief Minister of Uttar Pradesh, talking about how temples come up. There are others who say different things about a temple and a mosque. Let's tell you more about this political battle. The fight over faith has also turned into a full-blown political battle. Now Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has triggered a row. Yadav's statement saying a rock
red flag and people tree are enough to be called a temple has drawn massive backlash. 1991 का एक्ट है, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा रही। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। उनके लिए वही तालिबानी विचारधारा के लोग चाहिए उन्हें, और उन्हीं के लिए वो सरकार बनाते हैं। कभी देशवासियों के लिए तो काम करना उन्हें आता नहीं है। अगर आता होता तो इस तरह का बयान ऐसे समय पर देना कि अगर न्यायालय में भी वो विश्वास रखते होते तो ये बयान न देते, क्योंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय के निर्देशानुसार ही वहां सारे काम हो रहे हैं। Akhilesh has also accused the BJP of creating hatred among communities, as has AIMIM chief Asaduddin Owaisi. The BJP has lashed out at Owaisi, accusing him of communalizing the Gyanvapi issue. BJP IT cell chief branded Owaisi a bigot and a hypocrite for his Masjid The aur Masjid Rahegi declaration. मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। Meanwhile, another opposition neta, TMC MP Mahua Moitra, has sparked a storm by mocking the Gyanvapi survey. Her tweet mocking the shivling and equating it with the Baba Atomic Research Center has set off anger online. Barbs, jibes and taunts all dominating the political discourse on this highly emotive and evocative issue. Bureau Report, India Today. The Hindu side says this is proof clear as day that there was a temple here. Should this be handed over to the Hindu side for prayers as the demand is? Joining me on India First is Kaleemul Hafeez of the AIMIM and Sanju Verma of the Bharatiya Janata Party. Kaleemul Hafeez, आपने बात सुनी। प्रोफेसर नागेंद्र पांडे अध्यक्ष हैं मंदिर समिति के, मंदिर ट्रस्ट के। वो कह रहे हैं कि अब इतने सबूत मिल गए हैं, शिवलिंग से लेकर त्रिशूल और डमरू, इतने सबूत मिल गए हैं कि यहां मंदिर है। अब ये जमीन ट्रस्ट को दे देनी चाहिए ताकि पूजा अर्चना हो सके, भगवान शिव का अभिषेक हो सके। देखिए, तुम्हारा शहर है, तुम जो कहो बजा है वो। हमारा सिर्फ खुदा है मगर खुदा है वो। तो सवाल ये है कि एक महंत राजेंद्र तिवारी भी हैं जिन्होंने आपके चैनल पे और दूसरे चैनल पे आके ये बात कही कि अगर ये असली शिवलिंग मिला है तो जिसकी पूजा हो रही है वो कौन सा है? और जब 12 होने चाहिए पूरे हिंदुस्तान में तो ये 13वां कहां से आ गया? लेकिन मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप एक बहुत ही रेपुटेड और देश के नंबर 1 चैनल के एंकर हैं, कि वो रिपोर्ट जो लीक हुई है, जिसने न्याय व्यवस्था की मजाक उड़ाया है, जो उसकी गोपनीयता भंग की है, ये रिपोर्ट कोई विजय माल्या का खजाना है, नीरव मोदी का खजाना तो बता नहीं रही है, ना ये बता रही है राफेल की डिटेल। ये न्याय व्यवस्था के मजाक उड़ा रही है। यानी कि वो रिपोर्ट जो न्यायालय की मोहर लग के बाकायदा आनी थी मार्केट में 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, जिस रिपोर्ट पे डिसीजन देने के लिए खुद उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई कि निचली अदालतें इस पे कोई फैसला न सुनाएं, उसे आज हमारे के सभी चैनल डिस्कस कर रहे हैं और बाकायदा जो सरकार के लोग हैं, बीजेपी के एमपी, बीजेपी इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि आखिर इस भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसका मैंने इतना एक छोटा सा सवाल पूछा, आपने इतनी बड़ी भूमिका बांधी, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब देने से कतरा गए। मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। ये उत्तर आप ही दीजिए, लेकिन चलिए नहीं, लेकिन इतनी लंबी भूमिका क्यों? आप इतनी जलेबी क्यों बना रहे हैं? लेकिन चलिए मैं चलिए संजू वर्मा से भी इसका उत्तर लेने का प्रयास करता हूं। संजू वर्मा, नहीं, पहले आपने सुना कलीमुद्दीन हाफिज क्या कह रहे हैं? नहीं, आप भी उत्तर दीजिए ताकि बातचीत होती रहे। नहीं, कलीमुद्दीन हाफिज जी, नहीं, आप बातचीत कीजिए, प्रवचन नहीं, है ना? बातचीत करते हैं दोनों, ताकि हम दूसरा पक्ष में सुनते। उत्तर दीजिए संजू वर्मा की एक गोपनीय,
नहीं जी, उत्तर दीजिए संजू वर्मा। ये कह रहे हैं कि गोपनीय रिपोर्ट का पर्दाफाश इस तरह से अगर हो रहा है तो ये अदालत का मजाक उड़ाना है। You know, Gaurav, I just want to say that Ajay no longer the advocate commissioner. Now, whether he deliberately leaked the report or not, that is something which the courts will decide. But the key point is, let's not deflect from the moot issue here. Even the report submitted by... अरे भैया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप अभी रुक जाइए। मैडम, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। एक एक करके ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, ये दूसरे एडवोकेट कमिश्नर की हुई है। मैं इतना बता रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। आप ही बोलिए। दोनों आज तक और इंडिया टुडे के पास दोनों रिपोर्ट्स हैं। इंडिया फर्स्ट पर मेरे पास दोनों रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम तथ्यों पर रहे। हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर मैं तलाशने का प्रयास कर रहा हूं। संजू वर्मा, प्लीज रिस्पॉन्ड। थैंक यू गौरव। Gaurav, the key thing is that, the current Advocate Commissioner Vishal Singh has submitted the videography chip and his report. And what we have with us at our disposal today is that various motifs, impressions, be it swastika, be it nagmani, be it lotus, be it trishul, be it the imprint of Sheshnag, some broken idols of Hindu gods and goddesses. There is no doubt in anyone's mind that the Gyanvapi Masjid came about either in 1664 or 1669 by taking down the Kashi Vishwanath temple. The one argument that most people have been making is that the initial structure that was found of 12.8 feet, 12 feet in height and 8 inches in diameter was not a shivling, it is a fountain. Now, I just want to say, forget what Sanju Verma says, forget what the BJP says. The first known experiment on electricity was conducted only in 1752. So, by that logic, how is it that in 1664 or 1669, Aurangzeb indeed had fountains sprouting out of the Gyanvapi Masjid because there was no concept of electricity then. Like I said, 1752 में पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये फाउंटेन तो हो ही नहीं सकता। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट प्रूफ है, उस मुद्दे पर भी हम आते हैं, उस मुद्दे पर भी आते हैं, लेकिन जो ठीक ज्ञानवापी में नंदी एक एक मुद्दे को लेकर चलते हैं। आपने भी एक मुद्दा उठाया है। हाफिज भाई, ये बताइए मुझे, ये बताइए, हिंदू पक्ष मांग कर रहे हैं। संजू वर्मा, यू मेड योर पॉइंट वन बाय वन जरूर दीजिएगा। और ये भी बताइए कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि नई ईंटों से कुछ चिनाई की गई है तहखाने की, वो कह रहे हैं वो चिनाई हटाई जाए, नई ईंटें हटाई जाए। वो तलाशना चाहते हैं कि नीचे तहखाने में क्या छिपा है। तो अगर वहां मंदिर था और अगर वहां मूर्तियां खंडित हुई और मंदिर खंडित हुआ, तो क्या हिंदू पक्ष का यह कहना कि यहां पर पूजा अर्चना होनी चाहिए, इस बात में दम है? देखिए सावंत जी, पहले तो मैं ठीक, मैं एक बार फिर आपसे संपर्क साधने का प्रयास करूंगा। बट संजू वर्मा, two aspects raised here by Mr. Hafeez. One, he says this report was confidential. How is it out in public domain? And two, the other point that he's raising is, what does, the other point that is being raised right now is whether a trishul, a trident, a damru, whatever may have been found, what's the big deal? The Places of Worship Act very clearly says that the nature of that place of worship post 1947 cannot be changed. I'm glad you raised this issue. I have been on umpteen debates on this. The Ram Janmabhoomi verdict, which is being quoted now by a lot of Muslim scholars pertaining to the Supreme Court verdict of 2019, did say that the basic feature of the Constitution cannot be changed. But Gyanvapi does not come under the ambit of Places of Worship Act 1991, and I'll take 20 seconds to tell you why. Because there is a dispute called the Deen Mohammed versus Secretary of State judgment pertaining to 1936-37, wherein Deen Mohammed said that the entire
Gyanvapi, courtyard, complex, masjid, basement, etc. is Waqf property, and hence Hindus cannot go there to pray. 1937, there was a judgment, and Deen Muhammad was told that the entire Gyanvapi area is not a Waqf property, and Hindus can go to pray. So this is clearly a dispute that dates back to well before 15th August 1947, which means by virtue of that logic alone, the Places of Worship Act does not apply here. And Gaurav, just one last point. There is also the Ancient Monument and Archaeological Surveys Act of 1951 and 58, which says that if there is a structure which is more than 100 years old, it by and large automatically becomes an ancient monument. And if it is an ancient monument, then by that logic also, the Places of Worship Act 1991 does not apply to Gyanvapi Gauri Shringar Mandir. So I just want to ask the other side, which is saying that, you know, ये Places of Worship Act का उल्लंघन है. भैया ये dispute 1947 से पहले का है, तो Places of Worship Act तो यहाँ लागू ही नहीं होता, तो किस बात की आप लोग इतना दुहाई दे रहे हो? किस बात का कोहराम मचा कर रखा है? ठीक ठीक, कलीमुल हाफिज, दो बिंदु यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है. एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं लागू होता, यहां पर यह दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कह रही है यह विवाद उससे पुराना है. पहली बात. दूसरी बात, क्या इस्लाम में साफ तौर पर यह कहा गया है कि मस्जिद बनाने के लिए जो जमीन है वो खरीदी होनी चाहिए, या वो दान में मिली होनी चाहिए, या फिर वहां पहले कोई और धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए? तो क्या ज्ञानवापी उन तीनों पैमानों पर खरी उतरती है मस्जिद के तौर पर? देखिए सावंत जी, मैं माफी चाहता हूं, मेरी लाइट चली गई थी, मैं गायब हो गया था. लेकिन पहले मैडम ने जो सवाल किया कि एक पहले कमिश्नर को हटा दिया गया कि उन्होंने रिपोर्ट लीक की थी, तो उस कमिश्नर की रिपोर्ट हम डिस्कस ही नहीं करते. अब जो दूसरे कमिश्नर ने जो अंदर की रिपोर्ट दी है, जिस पर हम शिवलिंग की बात कर रहे हैं, ये दूसरे कमिश्नर की रिपोर्ट है, तो वो भी रिपोर्ट जो है उस पर कोई सैंक्टिटी या उसकी कोई वैधता नहीं है, क्योंकि उसे अभी तक कोर्ट ने मोहर नहीं लगाई. अब आते हैं, मैडम ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मैडम के ज्ञान के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जितनी मुगलिया बिल्डिंग इंडिया में है, दिल्ली में खासतौर से जामा मस्जिद चले जाइए, फतेहपुरी मस्जिद चले जाइए खुद, और जितने मुगलिया ताजमहल चले जाइए, सब में फाउंटेन है, और फाउंटेन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से चलता था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो एक तो मैडम की मैं ये इजाफा कर दूं. अब दूसरा, ये फाउंटेन ठीक, चलिए मैडम का पॉइंट छोड़िए, रिपोर्ट में है फाउंटेन बाद में बनाए गए. ठीक, रिपोर्ट अच्छा एक एक करके देखिए, नहीं मॉडरेट मैं करूंगा और केवल मेरी आवाज जाएगी और किसी की नहीं. बहुत साफ तौर पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि यह फव्वारा था, फाउंटेन था, लेकिन केवल 63 सेंटीमीटर का छेद निकला. दूसरी तरफ पानी कहां से अंदर जा रहा है ये कहीं से नहीं पता चल रहा है. 63 सेंटीमीटर के छेद में पानी आ कहां से रहा है जो निकासी होगी इस फाउंटेन के लिए, और क्या ये तलाशने के लिए नीचे तहखाने में खुदाई होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए? हाफिज साहब, ये मेरा मैं अब आता हूं सावंत जी आपके अगले पॉइंट पर. पहली बात तो इसमें छेद है, और फव्वारा जो है एक वुजू खाने का एक फंक्शनल एलिमेंट है, जो और मसाजिद में भी मौजूद है, जो नई बनी है उनमें भी मौजूद है, जो पुरानी है उनमें भी मौजूद है. लेकिन बात को हम यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये तो एक जांच का विषय है. अब आते हैं हम 1991 एक्ट पर. तो देखिए, जब 1937 में जब दीन मोहम्मद वर्सेस गवर्नमेंट का जो फैसला आया, उसमें ये क्लियर कट आया कि ये आराजी जो है, यानी कि जो टाइटल है, वो हनफी वक्फ बोर्ड की आराजी है, और उनको यहाँ पे मस्जिद नमाज पढ़ने की और उर्स करने की इजाजत है. यहां से तो ये तय हो गया कि नमाज मस्जिद है. अब 47 का जो भी इसका करेक्टर है वो मस्जिद का है, एप्लीकेबल नहीं होता, वो एप्लीकेबल नहीं. अच्छा, मेरे पास समय नहीं, तथ्यों पर हमें रहने की आवश्यकता है. मेरे प्रश्न आज बहुत सीधे इस रिपोर्ट पर है, जो आज रिपोर्ट आई है, जो एक्सक्लूसिवली हमारे पास इंडिया टुडे पर है, और इस रिपोर्ट पर उत्तर देने से किसी वजह से आज आप कतरा रहे थे, क्योंकि मेरे प्रश्न बहुत सीधे थे. जमीन को लेकर आप कतराए, उस शिवलिंग के मुद्दे पर, पानी की निकासी के मुद्दे पर, ऐसे कई मुद्दे थे. लेकिन आज समय सीमित था, और इसीलिए मुद्दे की बात पर और दाएं बाएं नहीं, भूमिका नहीं, सटीक उत्तर की मुझे अपेक्षा थी.
चलिए कल हम फिर प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट इज ऑल दैट वी हैव टाइम फॉर ऑन दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट दैट कम्स टू यू फ्रॉम काशी। Sanju Verma and Kareem Hafeez for joining me here on India Today. Many thanks. News and updates continue on India Today. Stay with us.